Okay, so today we'll be starting about circuit diagrams and Ohm's law. तो circuit diagram से start करते हैं. Potential difference तक हम पढ़ चुके हैं. So in this chapter you will be needed to draw some circuit diagrams. 10th class में circuit diagrams are pretty straightforward and very simple. So no one should face a problem in drawing these. Eventually in senior classes it might get a little bit difficult with the introduction of other things like gates, like resistors, transistors, okay, ground and stuff. लेकिन अभी के लिए हमारे कोर्स में बहुत ज्यादा सिंपल है. कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए वो कैसे बनते हैं, and then you are done with it. So first of all we have a connecting wire. Connecting wire सबके यूज लिखेंगे धीरे धीरे. You can note down साथ साथ में. It's simply a wire, a straight line probably. Then if we have joined wires, so we represent the joint with just a single dot or a point, and then we have crossing wire without connection. So if it does not have connection, you form some sort of a bridge over it. So like this, so that is clearly showing that they are not intersecting. Next, we have a resistor. We'll be studying what a resistor is. A resistor. Then we have variable resistor. Or a rheostat. No, I'm not enjoying. Which is some sort of two of the one ways. Either you can just draw a resistor and draw arrow over it, or you can draw a resistor and then from the top draw an arrow like this. This is also a rheostat, one of the two ways. This or this. Then we have more, probably you'll be using this for variable resistance and this for rheostat. Next, we have plug, key or switch. So we have plug, key. Okay. So it's some sort like this if it is off, and then a dot in the middle if it is on. Then we have switch. So switch would be somewhat like this. If it is open and it is closed. Open, closed. Then we do have an electric bulb, which is sort of like this. If it is not glowing, and if it is glowing, just make a few lines around it. Just glowing. Then we have voltmeter, which is connected always in parallel. We'll be studying about connections also. Positive, negative, V. This is your voltmeter. Connected always parallel. Then we have ammeter, which is connected always in series, denoted by A. This is connected always in series. In series, then we have a galvanometer, which is simply a G. सबके uses पढ़ेंगे. Then I might have missed
a cell and a battery. So a cell, the longer one is a positive terminal, shorter one is negative terminal. Then if there are series or if there are two cells, then it is a battery with two cells. Then if there are numerous cells and we do not want to make all of them just a dotted line, and then it is a battery with whatever many cells you want to put in. Yeah, that's it. Note this down. These are commonly used in your course, so इनके अलावा I don't think और कोई नहीं आएंगे. Uses पढ़ेंगे इसके बाद. So pretty much all of us know the use of connecting wires. So अगर आपको कोई भी conducting link बनाना है, तो आप conducting link कैसे बनाओगे? By connecting the wires. ठीक है? If you want to join two wires, then you'll use a joined wires. Then if you don't want to join two wires, you'll use crossing wires. Simple. Resistor is an it could be say an instrument. It's not an instrument, वैसे. It provides resistance. So resistance हम पढ़ेंगे. Resistance is the reverse in the flow of or hindrance in the flow of current. So अगर current flow कर रहा है उसको हम रोक रहे हैं तो that hindrance is known as resistance. So वो जो provide करता है उसे हम बोलते हैं, उस device को हम बोलते हैं resistor. Variable resistor can provide different resistances, whereas a resistor has a fixed resistance. तो रेजिस्टेंस हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद कि कैसे रेट होता है. तो मान लो 5 ओम होगा तो उसके ऊपर 5 ओम लिखा होगा एंड कैन ओनली प्रोवाइड एन रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम. On the other hand, variable resistant or rheostat can provide different levels of resistance. This regulator of a fan is an example of variable resistance, because उसकी resistance हम change कर सकते हैं depending upon हमें fan की speed क्या रखनी है. ठीक है. Like we can provide in the single circuit दोनों चीजें, and we can provide in different circuits depends upon the circuit. तो हम पढ़ेंगे कैसे कैसे. Next we have a plug key. Plug key सबको पता है. Key is an instrument used to अगर हमें पावर को कंट्रोल करना है, कब स्विच ऑन करना चाहते हैं, कब हम सर्किट कंप्लीट करना चाहते हैं, कब हम सर्किट ब्रेक करना चाहते हैं. तो अगर कनेक्टेड है, ऑन है, मतलब सर्किट कंप्लीट. अगर ऑफ है मतलब सर्किट ब्रेक हो गया. सर्किट ब्रेक होना मतलब करंट उसमें नहीं फ्लो करेगा. स्विच का भी एग्जैक्टली सेम पर्पस होता है. ऑन ओपन मतलब सर्किट ब्रेक, क्लोज मतलब सर्किट कंप्लीट. देन वी हैव गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट. ये इस चैप्टर में नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे हम. डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट. तो अगर हमें करंट डिटेक्ट करना होता है, दिस इज समथिंग वी बी स्टार्टिंग इन मैग्नेटिज्म. दैट अगर हमें एक मैग्नेट जब करंट इंड्यूस करता है, इंड्यूस करना मतलब करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम वो डिटेक्ट कैसे करें, उस इसलिए हम ये नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे. एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर करंट. इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. अभी हम देखेंगे सीरीज पैरेलल क्या होते हैं. वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस. It is always connected in parallel connection. Again, we'll be studying what is a parallel connection. Electric bulb is a simple bulb. Like it does not have a positive or negative thing because it has filament. तो ये filament होती है, इसलिए इसमें positive negative नहीं है. But they can be, आप सीनियर क्लास में पढ़ोगे diodes. तो there are diodes too. So diodes में there is a positive and negative. तो अभी हम डायोड्स नहीं पढ़ रहे, एलईडीज नहीं पढ़ रहे, लाइट एमिटिंग डायोड्स. तो इसलिए हम अभी सिर्फ बल्ब बना रहे हैं. दैट इज एनफ फॉर अस. Batteries on the other hand, a cell is a instrument for instrument that creates potential difference. So अगर आपको मेजर करने के लिए डिवाइस पूछा जाए
तो वो वोल्ट मीटर होता है, लेकिन अगर क्रिएट करने के लिए पूछा जाए पोटेंशियल डिफरेंस तो वो सेल होता है या बैटरी होती है with any number of cells. Okay, battery is a combination of cells. Note this down. Let's discuss a few types of connect. The only two types of connection. So there is parallel connection. So let's say we have two devices, device A and device B. If they are connected in parallel to each other, for example, let's complete this circuit, put in a cell, put in a key. So these two are connected in parallel. Now this is same as drawing this other figure, device A, device B. So you just have to look for the connections. These two diagrams are exactly same circuits. They are not different circuits. Or even if I draw like this, A, for example, A, B, if I even draw like this is still the same circuit. So these all three circuits are in parallel connection and are all the same, exactly same circuits. So there are different ways of drawing circuits, and these all three circuits mean the same thing. It will be very important because आप eventually system of resistors की resistance निकालना सीखोगे, जिसमें आपको parallel connection identify करना बहुत जरूरी है. So even though these two are not same looking as this one, but technically they are the same. Okay. So this is parallel connection when they are connected in parallel to each other. Series on the other hand, series connection. Again with an example. So let's draw series connection, device A and device B. So they will be in the same line. This is a series connection. Now this is also series, and even if I draw this, A, hold it down here, B, this is also series connection. There is no difference between these two lines. Okay. So no matter how you do it, for example, if you make A here and then get the wire a little bit higher, B here, it is still a single connecting link. So we have series connection. So all these three are series connection, but simplest one is how you draw. This is the simplest version of it, and this is the simplest version of this. This is how you will be drawing if you are set to make a circuit diagram. Okay. Let's try to make a circuit diagram on our own. So let's just try to make a circuit diagram comprising of a bulb and everything that we have currently studied. So let's just say we have a battery, a switch, then let's make a few resistors in parallel, and then a few resistors. Then let's put in a bulb and an ammeter and voltmeter. Let's see. Let's complete this. Um, so a battery, positive, negative, a key, switch on, then some resistors in parallel, a voltmeter, positive, negative. So we have, sorry, this would be negative. Yeah, positive, negative. So voltmeter, then we have an ammeter. Then let's say we make a bulb here
and maybe another resistor here. Every time we have a resistor, they are rated. For example, this is 2 ohm, this is 2 ohm, this is 3 ohm, this is 5 ohm. Okay, positive, negative. This is giving you the current reading. So this shows current flowing through the circuit. This is showing you the potential difference across the terminals. This bulb is, let's say, glowing. Okay, so this is a complete circuit once you make the direction of current. So direction of current is from conventional current, positive to negative. So this is how we will denote it through arrow. So we have a complete circuit here. Okay. This is a closed circuit. Since all the connections are closed and current is flowing, there can be an open circuit. For example, if I make such a circuit, battery, and then never connect these two, so this is an open circuit. Also, if the switch is off, for example, if the switch is off, then also it will be an open circuit. Okay, so these are the different types of circuits and a simple circuit diagram. ये यूज कैसे करना है धीरे धीरे समझ आएगा. अभी के लिए आप ये डायग्राम्स बना सकते हो एंड ऑल्सो यू कैन नोट डाउन द पैरेलल एंड सीरीज कनेक्ट. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ. सो एक सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं. So we have a simple experimental setup. What we did is we used a battery, simple key, and we have different, let's say, a variable resistance. Okay, a variable resistance, and across these terminals, we want to see key potential difference kitna hai, and then also we have put in an ammeter to check the current. So this is how the circuit goes. What we notice is कि जो हमारी एम मीटर है, मान लो हम प्लॉट करेंगे, तो ये इसके क्वेश्चंस कभी कभी आप देखोगे पेपर में आते हुए. अगर हम प्लॉट करें दोनों की रीडिंग्स, सो मान लेते हैं वी हैव वी आई ग्राफ, तो हम वी एंड आई अगर हम इन्हें प्लॉट करें एंड देन मान लो कुछ पॉइंट्स मिलते हैं हमें. इफ वी जॉइन देम वी गेट अ स्ट्रेट लाइन. Getting a straight line means that V is directly proportional to I. Okay. So this is what the Ohm's law states, that the current in the circuit and the potential difference across the terminals is equal to a constant or is directly proportional. Okay. So this is how we write it. So let's write the definition of this. By the way, this is the experimental verification of a circuit aapka. Circuit for experimental verification of Ohm's law. And this is the VI, velocity current, sorry, potential difference current graph. This is VI graph, potential difference. बोलो. वो हर बार पैरेलल में रखता है क्योंकि वो अगर आपको याद होगा तो हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स ही निकाल सकते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में निकाल सकते हैं. तो अगर हम सीरीज में लगा देंगे तो वो अपने अक्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा है, जो कि कोई फायदा नहीं होगा उसका. एम मीटर ऑन द अदर हैंड टोटल करंट देखना चाहता है, तो उसे हमें सीरीज में ही लगाना पड़ेगी. करंट, टोटल करंट कितना है पूरी की पूरी सर्किट. तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस करंट ग्राफ. You will get some questions related to this also, some MCQs at VI graph ये है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, एंड देन किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, मान लो आपको एक और ग्राफ दे दिया. So we will discuss all of these questions, but first let's write down the Ohm's law. So if physical conditions साथ साथ लिख सकते हो, such as temperature,
etc. of a conductor are kept unchanged the strength of current flowing through it is directly proportional to the potential difference across its end. Okay, so we write this as V is directly proportional to I, or V is equals to R into I, where R is constant of proportionality, and this R is known as the resistance. Resistance क्यों बुलाते हैं हम इसे? Because it is the property to resist the flow of charge. Okay, note this. यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो R की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं? V अपॉन I. इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम इसकी स्लोप निकालें, इस VI ग्राफ की स्लोप निकालें हम, तो उससे क्या मिल जाएगा हमें? रेजिस्टेंस. ठीक है. एंड इतना आपको पता होगा कि अगर मैं किसी ग्राफ को फ्लैटर बनाता हूँ, मान लेते हैं हम इस ग्राफ को फ्लैटर बनाते हैं, ये हमारा 1 है, R1, ये R2 है, तो बताना ज्यादा कौन सा होगा? R2 ज्यादा होगा. द स्टीपर इट इज द मोर द स्लोप. तो ये याद रखना, स्टीप मतलब मोर स्लोप. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कभी कभी एमसीक्यू में आपको दो ग्राफ दे रखे होंगे ना, आपसे पूछा जाएगा इनमें से रेजिस्टेंस ज्यादा किसकी है. ऑल्सो कभी कभी ग्राफ उल्टा होगा, तो ध्यान देना कि वी वी और आई ग्राफ है, वी वाई एक्सिस पे एंड आई एक्स एक्सिस पे. कभी कभी ग्राफ क्या आएगा? ग्राफ आ जाएगा आपको आई वी ग्राफ. तो आई वी ग्राफ में क्या होगा? आपको उसका उल्टा करना होगा, मतलब जो स्टीपर होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगा. सो बेसिक लॉजिक, बट ध्यान देना कि आपके एक्स और वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं. ठीक है. तो आई वी ग्राफ में आपकी जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 अपॉन स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ होगी. तो दैट इज द रीजन कि उल्टा करना पड़ेगा आपका. तो बहुत ध्यान से करना है, क्वेश्चंस आते हैं विपिन. So we studied about resistance, that resistance is the property to resist the flow of charges. Resistance की unit होती है ohm, represented by this symbol. So अगर हम रेजिस्टेंस कहीं भी निकालेंगे तो हम उसे ओम्स में लिखेंगे. पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट्स में लिखते हैं V, करंट को हम एम्पियर्स में लिखते हैं A, एंड रेजिस्टेंस को हम ओम्स में लिखेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल. ओके, let's try a few numericals on this concept. So let's see, the first one is, what is the resistance of an electric bulb when hot produces uses 20 ampere connected to a 220 volt supply line. बाय द वे हमारे घर पे भी जो सप्लाई लाइन आती है वो अप्रोक्सीमेटली 220 वोल्ट्स होते हैं.
So remember that. Not every country has the same supply line. They have countries with different supply lines, but in India we get approximately 220 volts. Why do I say approximately? Because हमें कभी भी exactly 220 नहीं मिलता है. That is the reason that we use stabilizers and ACs and stuff, because we do not get stable current that much. So we studied that P is equals to I into R according to Ohm's law. ये हमेशा लिखोगे आप जब भी न्यूमेरिकल करोगे. P equal to I R is according to Ohm's law. So then V is given 220 volts. Current is given 20 into R. R is equals to 220 divided by 20, which is equals to 11 ohms. So very good. बिल्कुल सही. This is 11 ohms. हाँ, डायरेक्टली भी कर सकते हैं. अगर वो भी करोगे तो भी ऐसे लिखना R is equals to V upon I, एंड यहाँ पे ब्रैकेट में ओम्स लॉ लिखना. ओम्स लॉ लिखना जरूरी है. बस और कोई फर्क नहीं पड़ता. आप इस वर्जन को यूज करो, इस वर्जन को यूज करो, या फिर कोई भी और वर्जन को यूज करो. ठीक है. सो आई थिंक आई नीड टू डू अ लिटिल बिट मोर ऑफ दीज क्वेश्चंस. सब में सेम फॉर्मूला लगेगा. दो चीजें दे रखी होगी, तीसरी निकालनी होगी. प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल इक्वेशंस. हम और कोई प्रैक्टिस नहीं करने वाले इसकी. We'll straight up jump on to a few of the other topics, but before that you should know the types of current. So this is something I missed in last class. So we have AC and DC. Let's try to just understand the difference in the two types of current. So what happens is जब हम normally DC की बात करते हैं, DC is direct current. So what अगर मैं इसका ग्राफ बना के दिखाऊं आपको. सो डायरेक्ट करंट इज अ स्ट्रेट सिंपल लाइन. ठीक है. दिस इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इट हैज प्रॉपर टर्मिनल्स, दैट इज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल. सो अगर कोई भी चीज डीसी करंट, डायरेक्ट करंट यूज कर रही है, उसमें देयर विल बी अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव. ठीक है. एसी ऑन द अदर हैंड, alternating current is a little bit different. What happens is in AC, the current is fluctuating. Current is fluctuating from positive, negative, positive, negative. This is the graph of alternating current. So this alternating current, since it is fluctuating between positive and negative, it does not have a positive or negative terminal. Rather, it has a live wire and a neutral wire. There is another wire जो करंट में यूज नहीं हो रहा, बट इंस्ट्रूमेंट्स को सेफ रखने में यूज हो रहा है, विच इज ग्राउंड वायर. सो अगर आपने कभी भी एक प्लग पॉइंट देखा है जिसमें 3 सेक्शंस होते हैं, उसमें से एक होता है लाइव, एक होता है न्यूट्रल, एंड देन एक होता है ग्राउंड. जो सबसे टॉप मोस्ट होता है, दैट इज द ग्राउंड वायर. दिस इज द रीजन दैट अगर आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हो तो वो ऑल्टरनेटिंग करंट पे चलते हैं. आपने नोटिस करा, आप प्लग पॉइंट को उल्टा लगाओ, सीधा लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ऑन दी अदर हैंड, अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करें, जो भी इंस्ट्रूमेंट डीसी पे चलते हैं डायरेक्ट करंट पे, अगर तुम सेल्स उल्टी लगा दो रिमोट में, तो क्या रिमोट चलेगा? नहीं चलेगा. So it's very important that since there is a difference in negative and positive in direct current, so you cannot really opposite आप टर्मिनल्स को नहीं कर सकते. लेकिन ऑन दी अदर हैंड ऑल्टरनेटिंग करंट सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, लाइव एंड न्यूट्रल वायर के बीच में कंडक्टिंग लिंक प्रोवाइड कर रहा है. तो वो किसी भी डायरेक्शन से बने, वो हमेशा करंट फ्लो करे. बट द प्रॉब्लम इज नॉट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स कैन वर्क इन ऑल्टरनेटिंग करंट. फॉर एग्जाम्पल फैन की बात करते हैं. फैन को अगर हम सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट पे लगा देंगे, तो व्हाट वुड हैपन इज कि जब करंट एक डायरेक्शन में जाएगा तो फैन एक साइड मुड़ेगी, एंड देन दूसरी डायरेक्शन में जाएगा तो फैन दूसरी साइड मुड़ेगी, which would not solve the purpose of fan because वो continuously एक डायरेक्शन में मूव करना चाहिए. So what happens is in a fan कैपेसिटर लगा होता है. आपने एक व्हाइट सा देखा होगा, ट्यूब होती है. तो कभी कोई फैन ओपन होगा, देखना उसमें व्हाइट कलर की एक ट्यूब होगी. सो दैट व्हाट इट डज इज, वो कैपेसिटर क्या करता है कि जब ऑल्टरनेटिंग करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तब वो चार्ज स्टोर करता है, एंड देन जब दोबारा सेम डायरेक्शन में जाता है तब वो चार्ज रिलीज करता है, जिससे कंटिन्यूअस मोशन में ये रोटेट करता है. और एल्स इट कुड नॉट वर्क ऑन ऑल्टरनेटिंग करंट. TVs also work on direct current, not on alternating current. So TV के अंदर ही there is converter जो alternating current को direct current में convert करता है.
Cars also use direct current or the current needs, not the engine needs. So engine के लिए you don't really need except for ignition, आपको कहीं current की जरूरत पड़ती नहीं है. Engines are working in a very different manner. But जितने भी आपके appliances चल रहे होते हैं गाड़ी के अंदर वो सारे direct current चाहिए होता है ना. और उसमें मिलता भी direct current है फायदा, क्योंकि बैटरी से ही, हाँ बैटरी से ही चलती है, तो in many ways batteries are direct current. तो बैटरी डायरेक्ट करंट ही प्रोवाइड करती है. अल्टरनेटिव करंट इज प्रोवाइड बाय electrical transmission lines. There are benefits and disadvantages of using both the types of current and the uses of it. So that is the reason. But large scale production of alternating current ही होता है, जो आपके घर पे आता है वो alternating current ही होता है. तो इन plug points में सारे alternating current ही है. There's also common misconception that direct current जो होता है वो alternating current से weak होता है. बिकॉज जनरली हम बैटरीज में, छोटी छोटी बैटरीज में देखते हैं डायरेक्ट करंट को. तो दिस इज अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन कि सबको लगता है डायरेक्ट करंट में भी वीक होता होगा. ऐसा कुछ नहीं है. अगर हम इनफ वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे दोनों को, तो दोनों ही सेम इक्वली डेंजरस है एंड इक्वली पावरफुल. डीसी पे चलती है. डीसी. तो बेसिकली इन्वर्टर इज एन इंस्ट्रूमेंट जो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट पे कन्वर्ट कर रहा है. सो इट इज अ कन्वर्टर. इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, इन्वर्टर कुछ भी नहीं होता. बैटरी होती है, डीसी को वो एटी एसी में कन्वर्ट कर रहा होता है, जिससे आपके सारे अप्लायंसेस में वर्क कर पाए. सो दैट इज ओनली द थिंग दैट inverters are do. So this is one of the general knowledge thing. I don't think you'll ever receive questions from this concept, but you can discuss this in a lot more detail. There is something called conversion of direct current, alternating current into direct current. So first it is converted into half wave, then we use a half wave rectifier, we transverse the wave onto another, and then some of the things that you'll be studying in electronics and senior class. अभी के लिए इतना काफी. Note this down, फिर आगे बढ़ते. Factors affecting resistance. Let's see. So again, let's start with a simple example. ठीक है. सबसे पहले लेंथ ऑफ कंडक्टर की बात करते हैं. लेंथ ऑफ कंडक्टर. ऑब्वियसली जब हम एक फैक्टर की बात करेंगे तो हम और सब चीजों को कांस्टेंट मानेंगे. सो याद रखना. एंड सम ऑफ वन ऑफ द थिंग्स दैट वी विल नॉट टॉक अबाउट इज टेम्परेचर. हम टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखें. सो लेट्स से लेंथ ऑफ कंडक्टर की बात करते हैं. तो जस्ट इमेजिन, अगर वाटर का एग्जांपल लो, बिकॉज दैट इज वेरी मच इमेजिनेबल. सो अगर मेरे पास एक ट्यूब है जिसकी लेंथ इतनी छोटी है, एंड देन एक ट्यूब है जिसकी लेंथ इतनी बड़ी है, वाटर को ज्यादा प्रॉब्लम किससे हो जाने में लगेगी? द बिगर ट्यूब, ए और बी? बी. विच मीन्स रेजिस्टेंस क्या मेजर करता है? रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस. तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी क्या होगी? रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी. सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द length of the conductor. So you write this as resistance is directly proportional to the length of a conductor. नेक्स्ट बात करेंगे हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, which is another way of saying thickness. So let's say again example, we have a thin tube and we have a very thick tube. किसमें वाटर ज्यादा इजीली जा पाएगा? ए और बी? बी. विच मीन्स कि रेजिस्टेंस ज्यादा किसमें होगा? ए में. So there is an inverse relationship between the area of cross section. अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो this is a smaller circle, and इसका area of cross section मतलब अगर मैं एक पॉइंट पे से कट करूं तो उस पार्ट का एरिया, so this would be a much larger area. So R is inversely proportional to the area of cross section. The resistance is inversely proportional to the area of cross section. तो आपको किसी किसी क्वेश्चन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना भी हो सकता है,
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सर्कल है तो यू यूज द एरिया पाई आर स्क्वायर, अगर कभी क्यूब है तो ए स्क्वायर, अगर कभी रेक्टेंगल है तो एल इन टू बी, डिपेंडिंग अपॉन वायर की क्या शेप है. वायर कैन बी सिलेंड्रिकल, वायर कैन बी क्यूबिक, क्यूबॉइडल, सो वायर कैन बी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक है, जनरली सिलेंड्रिकली होंगे तो यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्म. Let's just combine the first two formulas. So R is directly proportional to L and inversely proportional to A. अगर हम equality लगाना चाहेंगे तो we will be using a constant of proportionality. ठीक है, so this constant of proportionality in this case is called resistivity and it is denoted by rho. So this is kind of like P L by A. This P is the resistivity and this is a characteristic property of a metal, which means that it is fixed. It does not change. So एक substance की resistivity fixed होती है. It cannot change. It has a fixed value and that will never change. Characteristic property. Definition लिखाऊंगा मैं, don't worry. ये समझ आया ना सबको ये फॉर्मूला कैसे बनाया हमने. तो बेसिकली हमने इन दोनों फॉर्मुलेस को कंबाइन कर दिया एंड देन इक्वालिटी लगाने के लिए हमें एक कांस्टेंट यूज करना पड़ा. सो पी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो जो हमें प्रोपोर्शन करने के लिए चाहिए था, कांस्टेंट ऑफ proportionality, and this is known as resistivity. Now we'll be writing the formal definitions of resistivity. Yeah. Defined value की fixed value होगी. And it is also measured in rho. So इसकी units भी rho होती है. Sorry, ohm meter. So yeah, ohm meters में होती है. चलो ठीक है, रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन लिखते हैं. So resistivity of a material, साथ साथ लिख सकते हैं, is defined as the resistance offered by cube of the material, cube of the material of side 1 meter when current flows perpendicular to the opposite faces of the cube. इसकी cylindrical definition भी होती है, तो you can also use cylinder in that form. So resistivity of a material is also defined as the resistance of a by cylindrical conductor of material of cross-sectional area 1 meter square and the length 1 meter when current flows through perpendicular on opposite ends of the cylinder. So other definition or interpretation. Resistivity is fixed at a given
temperature. Resistivity will also change with temperature. It is fixed only at a given temperature. There is something called temperature constant, but इतनी detail में हम resistivity के बारे में नहीं पढ़ेंगे. On the basis of resistivity, materials can be categorized as conductors, good or bad. Then we have semiconductors. Then we have insulators. And then we have superconductors. On the basis of resistivity, you can categorize it. रेजिस्टिविटी बोल रही है कि अगर हमारे पास एक यूनिट क्यूब होता है, यूनिट क्यूब मतलब एक ऐसा क्यूब जिसकी 1 मीटर साइड्स होती, ठीक है. इसमें से अगर करंट परपेंडिकुलरली फ्लो करता है तो इसकी इस सब्सटेंस की जो रेजिस्टेंस होगी वो रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टेंस हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं. रेजिस्टेंस की डेफिनेशन यूज करके हम रेजिस्टिविटी डिफाइन कर. एंड ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिक होगा फॉर मटेरियल्स एट फिक्स टेम्परेचर. ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इट विल नॉट चेंज. बेस्ट कंडक्टर हमें पता है क्या होता है, सिल्वर. मैं आपको एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ कंडक्टर्स के. वी हैव gold, silver, we have iron, platinum, all metals generally. Then semiconductors may we have silicon, we have germanium. Insulators may we have glass, then wood, then mica, whatever it's called, rubber, hard rubber, quartz and stuff. सुपर कंडक्टर्स के मैं एग्जांपल लिखा रहा हूँ बिकॉज अच्छा बाय द वे मैं आपको समझाए हैं. कंडक्टर्स वो है जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, सेंसर बहुत कम है, तो वो अच्छे से करंट बेसिकली उनके थ्रू इजीली करंट पास कर सकता है. सेमीकंडक्टर्स दे हैव हाई रेजिस्टिविटी, बट उस रेजिस्टिविटी का यूज होता है. इंसुलेटर्स हैव वेरी वेरी हाई रेजिस्टिविटी सच दैट करंट कैन नॉट पास थ्रू इट. ठीक है. सुपर कंडक्टर्स ऑन द अदर हैंड आर have almost zero resistivity at specific temperatures. Semiconductors की basically semiconductors की resistivity ज्यादा होती है, उनके specific uses होते हैं. Air is a like more like an insulator. Bad conductor, good conductor हम बोल सकते हैं. तो bad conductor है वो, conductor नहीं बोल सकते आप उसे, semiconductor नहीं. Superconductors, on the other hand, are materials that at a very low temperatures, at very specific low temperatures, have almost zero resistance. When something has almost zero resistance, it means it is very efficient in electrical transmission. But since utne low temperatures reach karna is very difficult, that is the reason they are not generally widely used. But superconductors, जो बहुत low temperatures पे, at very low temperatures, the resistance is almost zero, very close to zero. That is the reason they are called superconductors. I cannot really give you examples because I have to give temperature specific examples. So that is the reason.
The temperature at which this happens, this temperature is known as transition temperature. Transition temperature. So some of the metals which generally have even poor conductivity at low temperatures can act like superconductors. For example, it is mentioned copper at 40 Kelvin, which is a very low temperature, 40 Kelvin, is a superconductor. Okay. There are a lot of numericals related to resistivity also that we'll be doing, but I guess that is it. We have some particular materials जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए. For example, tungsten. So some of the important metals. Tungsten has a high melting point and becomes incandescent. Meaning emits light at 2400. Again, you don't need to remember this temperature, but at 2400 Kelvin. So since it has high melting point and also it has high resistivity, this is the it has its resistivity is low. Resistivity अच्छा बहुत important है कि it's very common to think कि tungsten is used in bulb filament. ठीक है, तो टंगस्टन अगर यूज होता है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, मीनिंग कि बहुत हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट नहीं होता है एंड बहुत हाई टेम्परेचर पे वो लाइट एमिट करता है. बट मोर इम्पोर्टेंटली इट इज वेरी मच कॉमन टू थिंक दैट कि वो उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तभी तो वो हीट अप हो पाएगा इनफ. बट द थिंग इज कि इसकी रेजिस्टिविटी कम ही होती है. सिंस उसकी रेजिस्टिविटी कम है इसलिए हम उसकी इतनी थिन वायर बनाते हैं. अब थिन वायर से क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम होगी. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम होगी तो हमारी रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होती जाएगी. दैट इज द रीजन कि उसकी रेजिस्टिविटी लो होने के बाद भी हम उसकी इतनी थिन वायर यूज करते हैं कि हमारी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, हाई हो जाती है. That is the reason it can reach the temperature of 2400 K without melting since it has high melting point. So this is how bulbs filament work. ठीक है, but again it is a very inefficient form because काफी सारी heat के form में energy waste हो जाती है. So it's very important to note that. ठीक है. Then we have other materials. Nichrome. It is an alloy होता है. High resistivity and high melting point. अब इसमें दोनों चीजें, high resistivity and high melting point. Also it does not react with air when it is red hot. So ये heating devices में use होता है. Used in, इसमें ये लिख लो bulb filament, and this is used in bulb filament. Nichrome is used in heating device.
there are a lot more uses and examples of things that I don't need to write. For example, copper wires to use होती है because they have low resistivities, hence they can be used to make electrical wires. So it's very logical. You do not need to write this down. There are a few numericals of these two things. तो हमने दो चीजें जो पढ़ी है, पहली V equal to IR Ohm's law, and then R is equals to PL by A, rho L by A. तो ये दोनों चीजें आपको क्या करनी है, ये दोनों चीजों के न्यूमेरिकल्स है वो आप ट्राई करके, आई विल सेंड यू सम न्यूमेरिकल्स एंड एनसीईआरटी के बिफोर फैक्टर्स इफेक्ट, सॉरी, बिफोर सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है आपको करने हैं सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स से पहले जितने भी न्यूमेरिकल्स है आपको सारे ट्राई करने हैं. सो प्लीज वो करके आना. वी विल बी डिस्कसिंग देम इन द नेक्स्ट क्लास. लिख लो होमवर्क, नोट दिस डाउन, डू नॉट